गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल आर? फाइन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवर लेसन लाइट. You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole. You may have also seen beams of light from the headlamps of scooters, car and engines of trains. A beam of light can be seen from a torch of some. You may have seen a beam of scare searchlight from a lighthouse or from an airport tower. What do these experiences suggest? 15.1 Light travel along a straight line. Bhujo recall an activity he performed in class 6th. In that activity, he looked at a lighted candle first through a straight pipe and then through a bent pipe. Why was Bhujo not able to see the candle flame through a bent pipe? This activity showed that light travels along straight lines. How can we change the path of light? Do you know what happens when light falls on a polished or a shiny surface? 15.2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. देखिए बेटा, हमें ना अगर कोई लाइट जो है वो सीधी सीधी गिरती है, अगर हम उसको चेंज करना चाहेंगे तो वो चेंजिंग मोड पर नहीं होगी. ये आपने 6th स्टैंडर्ड में जो है पढ़ा होगा. जब पाइप को जो है एकदम स्ट्रेट करके अगर हम देखेंगे लाइट की रोशनी तो सीधी दिखेगी, और अगर हम बाइंड कर देंगे तो उसमें हमें लाइट की रोशनी सीधी दिखाई नहीं देगी. One way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface. For example, a shining stainless steel plate or a shining steel spoon can change the direction of light. The surface of water can also act like a mirror and change the path of light. Have you ever seen the reflection of tree or building in water? Any polished or a shiny surface can act as a mirror. What happens when light falls on a mirror? You have learned in class 6 that a mirror changes the direction of light that falls on it. The change of direction by a mirror, underlined, the change of direction by a mirror is called reflection of light. Can you recall the activity in which you got the light of torch reflected from a mirror? Let us perform a similar activity. Take a torch, cover it glass with a chart paper which has 3 narrow slits as shown in figure 15.5. नेक्स्ट उस पर देखेंगे स्प्रेड अ शीट ऑफ, ये देखो ऐसे, ठीक है, चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड. फिक्स अ प्लेन पेपर मिरर स्ट्रिप vertically on the chart paper. Now direct the beam of light on the mirror from the torch with slit. Place the torch in such a way that light is seen along the chart paper. आप ऐसा करके देखिए, इसमें बना करके देखिए तो आप देखोगे कि लाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट ही जा रही है, लेकिन वापस जो है वो कांच से टकरा करके फिर वापस बैक होकर आ रही है. तो ये देखो क्रॉस का पोजीशन बन रहा है ना. तो यहाँ पर इमेज कैसी बन रही है, क्रॉस वाली बन रही है. फिर एक्टिविटी 15.2 में भी यही है. प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन अ फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर. Try to see the flame of a candle in the mirror. It appears as if similar candle is placed. It appears placed behind the mirror. The candle which appears behind the mirror is the image of the candle formed by the mirror. The candle itself is a object. कैंडल क्या हो गई है, ऑब्जेक्ट बन गई है. ठीक है. नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजिशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम वही है. वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस? डिड द फ्लेम अपीयर ऑन द टॉप ऑफ कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट? सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट. इरेक्ट तो होगी ना. इरेक्ट का मतलब क्या होता है,
गति अवरोध होना यानी अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है। एन इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड of the same size as the object. Now place a vertical screen behind the mirror. Try to obtain the image of the candle on this screen. Can you get the image on the screen? Now place the screen in front of the mirror. Can you get the image on the screen? Now you will find that the image of the candle cannot be obtained on the screen in the either case. What about the distance of the image from mirror? Let us perform another activity. अब ये एक एक्टिविटी और दे रखी है, इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे शार्पनर रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है और चेस बोर्ड है ना। तो आप इस पे देखोगे, इस पे ये एक्टिविटी पढ़ना। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर देखना। यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी है कि इस लड़के ने अपना राइट हैंड लेफ्ट साइड का हैंड खड़ा किया है और मिरर में कैसा दिख रहा है, राइट हैंड साइड का, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे ये आ रहा है एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस में हमेशा जो है वो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि जो आगे जो गाड़ी चल रही होती है उसमें एम्बुलेंस सीधा दिखाई दे। वो जो लेंस होता है वो कैसा होता है, कॉन्फिडेंस लेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है, कैन यू अंडरस्टैंड वाई द वर्ड्स एम्बुलेंस इज रिटर्न when the driver of vehicle ahead of an ambulance looks in her or his rear view mirror, he can read ambulance written on it and give way to it. Understand कि वो वहाँ पर जो है वो उसको सीधा पढ़ पाए, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए, प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर। Paheli and Bujo were waiting to their dinner. Bujo lifted a stainless steel plate and saw his image in it. Oh, this plate acts as a plane mirror. My image is erect and is so of the same size. Paheli saw her image using the back of a steel spoon. Bujo, look her. I can also see my erect image, though it is smaller in the size. The spoon also act as a mirror of some kind, said Paheli. आप देखते होंगे अपने घर में, आपके घर में कांच, अगर स्टील की प्लेट है, ग्लास है, चम्मच है, उसमें आप देखिएगा आपका जो फेस है आप देखोगे तो उसमें नज़र आएगा, तो वो इरेक्ट कहलाता है। जिस तरह की साइज़ होगी उस तरह का आपको नज़र आएगा, ठीक है। एक्टिविटी 15.5, टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून, है ना। अब ये लो और इसको आप स्पून लेकर के देख सकते हो या थाली लेकर के देख सकते हो। द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट एज अ मिरर। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज अ स्पेरिकल मिरर। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज कॉनकेव, अंडरलाइन, स्पेरिकल मिरर क्या कहलाता है, कॉनकेव, इट इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। If the reflecting surface is convex, that then it is a convex mirror, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब take a rubber ball and cut it portion of with knife or a hack saw blade. Be careful, or inner surface of a cut ball is called concave and outer surface is called convex, ठीक है। The inner surface of a spoon acts like a concave mirror, while its outer surface acts like a convex mirror. We know that the image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen. Let us investigate if it is also true for the image formed by a concave mirror. Take a concave mirror, hold it facing the sun, try to get the light reflected by the mirror on a sheet of paper. Adjust the distance of a paper until you get a sharp, bright spot on it. Hold the mirror and the sheet of paper steadily for a few minutes. Does the paper started burning? This bright spot is in effect the image of the sun. Notice that this image is formed on a screen. An image formed on a screen is called a real image. Recollect that in activity. आप such an image is called a virtual image. आप ऐसा एक जो है वो ले सकते हो, मिरर ले सकते हो, कॉनकेव मिरर, और उसको सन की तरफ रखो और नीचे एक शीट रखो,
ठीक है, और उसको उसकी तरफ डायरेक्शन करके रखो और ऐसे रखो कि जो उसकी रिफ्लेक्शन है वो पेपर के ऊपर आए। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए रखना, देखना पेपर जो है वो बर्निंग होना शुरू हो जाएगा। एक्टिविटी 15.7 देखिएगा। 15 centimeter by 10 centimeter. This will act as a screen. Keep a lighted candle on the table at the distance of about 50 centimeter from the mirror. Try to obtain the image of the flame on the screen. For this, move the screen till a sharp image of the flame is obtained. Make sure that the screen does not obstruct the light from the candle falling on the mirror. Is this image real or virtual? Is it of the same size or a flame? Now move the candle towards the mirror and place it all the different distances. आप एक ऐसा एक कॉन्क्लेव जो है कॉन्केव ग्लास लगाइए और एक बीच में एक जो है वो क्या कीजिए कैंडल लगाइए और फिर उसका जो है मिरर रिफ्लेक्शन देखिए। तो आपको क्या लगेगा, आपको दिखाई देगा कि वो जो है वो सेम उसमें वर्चुअल दिख रहा है या वो जो है वो रियल इमेज दिख रहा है। ठीक है, we see that the image formed by a concave mirror can be smaller or larger in the size than the object. Then image may also be real or virtual. Concave mirror are used for many purposes. You might have seen doctors using concave mirrors for examine eyes, ears, noses and throat. Concave mirrors are also used by dentists to see an enlarged image of the teeth. The reflectors of torch headlights of cars and scooters are concave in shape. Bhuja observed his image in the shiny surface of the ball on his new bicycle. He found that his image was erect and smaller in size. He wondered if the ball is also a kind of spherical mirror. Can you recognize the type of the mirror? ये रिपीट करेंगे एक्टिविटी। नाउ इधर देखिए, images formed by lenses. You might have seen a magnifying glass. It is used to read very small print. You might have also used it is to observe the body part of a cockroach or an earthworm. The magnifying glass is actually a type of a lens. Lenses are widely used in spectacles, telescope and microscope. Try to add a few more uses of lenses to this list. Get some lenses, touch and feel them. Can you find some differences just by touching those lenses which feel thicker in the middle than the at the edges are convex lenses? Those which feel thinner in the middle than at the edges are concave lenses. Notice that the lenses are transparent and light can passes through them. Okay, caution: it is a dangerous to look through a lens at the sun or the bright light. You should also be careful not to focus sunlight with a convex lens or on any part of your body. Now take a convex lens and magnifying lens. Put it in the path of sun rays. Place a sheet of paper. ये जैसे हमने पीछे एक्टिविटी में पढ़ा था ना, वही है, उसमें स्पॉट बनने लग जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, टेक अ कॉन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इट ऑन अ स्टैंड एंड यू डिड अ कॉन्केव मिरर. प्लेस इट ऑन ए टेबल. प्लेस अ लाइटेड कैंडल. वापस से वही एक जो हमने वहाँ पे किया था, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन बताएंगे कि देखो स्ट्रेट आ रहा है या तिरछी किरणें पड़ रही है ना। यहाँ पे देखो ये ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो सनलाइट का कलर है वो भी बदलना शुरू हो जाएगा, जैसे कि जिस तरीके से सनलाइट की वर्चुअल इमेज आ रही है या जो है वो रियल इमेज आ रही है। ठीक है, ये जो है कॉन्वेक्स की है 15.26 में देखो और 15.27 में देखो। ये जो है वर्चुअल इमेज है और ये कॉन्वेक्स लेंस की है और ये कॉन्केव लेंस की है। ठीक है, सनलाइट वाइट और कलर्ड. Have you ever seen a rainbow in the sky? You might have noticed that it appears usually after the rain when the sun is low in the sky. The rainbow is seen as a large arc
in the sky with many colors. How many colors are present in a rainbow? When observed carefully, there are 7 colors in a rainbow. Though it may not be easy to distinguish of them, these are red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. You might have seen that when you blow soap bubbles, they appear colorful. Similarly, when light is reflected from the surface of a compact disc CD, you see many colors. On the basis of these experiences, could we say that the sunlight is a mixture of different colors? Okay, take a glass prism, allow a narrow beam of sunlight through a small hole in a window, a dark room, to fall on the face of prism. Let us light coming out another face of prism fall on a white sheet of a paper on a white wall. What do you observe? Do you see colors similar to those in a rainbow? This shows that the sunlight consists of 7 colors. The sunlight is said to be white light. This means that the white light consists of 7 colors. Try to identify these colors and write their names in your notebook. Can we mix these colors to get white light? 7 segments. Take a circular cardboard disc of about 10 cm diameter. Divide this disc into 7 segments. Paint the 7 rainbow colors on these segments as shown in figure 15.31. On this segment it shows. You can also paste colored paper on this segment. Make a small hole and the center of the disc. Fix the disc loosely on the tip of refill of a ball pen. Ensure that the disc rotated freely. Rotate the disc in the daylight. When the disc is rotated fast, the color get mixed together and disc appears to be whitish. Such a disc is पॉपुलरली नोन एज अ न्यूटन्स डिस्क। ठीक है, अब ये आप ऐसा, ये तो बहुत इजी है, ये प्रैक्टिकल आप खुद भी ईच एंड एवरी स्टूडेंट करके देख सकते हैं। ऐसा आप करके देखना। पूरा चैप्टर में जो एक्टिविटी मैंने पढ़ाई है आपको, आप रीड करके देखेंगे। कुछ भी ना समझ में आए तो फील फ्री आस्क मी। नाउ बाय।